Now tell me the difference between the VT and VF. Absolutely. So the difference between VT, which is ventricular tachycardia, and VF, or ventricular fibrillation, is mainly about how the heart's rhythm is behaving. In VT, the ventricles are beating very fast, but still in a somewhat organized way, and that can sometimes still pump some blood, at least for a little while. In VF, on the other hand, the ventricles are just quivering chaotically, which means they're not pumping blood at all. Welcome to my new sessions. In these sessions, we are going to know about what is the difference between ventricular tachycardia and ventricular fibrillation. Please watch the video till the end to get more information about it. I'm here to chat about anything you'd like, whether it's something on your mind or maybe just a random topic you're curious about. What are you thinking about right now? Hi. So tell me the definitions of VT. Sure. So VT most commonly stands for ventricular tachycardia, which is a type of heart rhythm disorder. It means your heart's ventricles are beating abnormally fast. It's something that's diagnosed with an ECG and can have a variety of causes, from heart disease to electrolyte imbalances. Okay, tell me the common causes of VT. So when it comes to the common causes of VT, we're generally talking about things like coronary artery disease, previous heart attacks, and structural heart issues like cardiomyopathy. Basically, anything that messes with the heart's electrical system can trigger it. There are also electrolyte imbalances or certain medications that can lead to VT. Yeah, okay. Now tell me, what is the most common sign and symptom of VT? Absolutely. So one of the most common signs and symptoms of VT is a really rapid heartbeat that can feel like your heart's racing or pounding. People often describe feeling dizzy or lightheaded, and in more severe cases, you might experience chest pain or even shortness of breath. It can definitely be a bit alarming. But of course, if you're seeing these symptoms or studying this in a clinical context, it's always good to dig deeper. Let me know if there's anything more specific you'd like to know. Okay, tell me what is the emergency treatment of VT? Sure, the emergency treatment for VT really depends on how stable the patient is. If it's a life-threatening situation and the patient is unstable, doctors might go for something called electrical cardioversion. That's where they deliver a shock to the heart to get it back into a normal rhythm. If the patient is stable, they might use medications like amiodarone to help control the heart rhythm. It really depends on the scenario, but definitely it's treated as emergency because you want to restore a normal heart rhythm as quickly as possible. Anything else you're curious about on that topic? Okay, tell me what is the VF? Absolutely. So VF stands for ventricular fibrillation, and it's a really serious cardiac rhythm disturbance. Basically, it's when the ventricles start quivering instead of pumping blood properly, and that can lead to a sudden cardiac arrest. It's definitely a medical emergency, and the treatment is immediate defibrillation to get the heart back into a normal rhythm. It's kind of the most critical rhythm disturbance we see in emergency situations. So is there something specific that led you to ask about that? Okay, tell me tell me the main common causes of VF. Yeah, sure thing. So when we're talking about the main causes of ventricular fibrillation, VF for short, we're typically looking at things like severe coronary artery disease or a heart attack. Essentially, anything that cuts off blood flow to the heart muscle can mess with the heart's electrical system and trigger VF. There are also things like cardiomyopathy or certain electrolyte imbalances that can be culprits. It's definitely something that's taken very seriously in emergency care. So I'd love to hear... Now tell me, what is the main sign and symptom of VF? Absolutely. So when it comes to the main signs and symptoms of VF, ventricular fibrillation, the big one is that it usually causes a person to collapse suddenly and lose consciousness. That's because the heart isn't pumping blood at all. It's more like it's quivering. So the brain and organs aren't getting the oxygen they need. Often there are no warning symptoms at all. It's just an immediate medical emergency. That's why defibrillation and CPR have to happen super quickly. So it's definitely a serious topic, and I'm curious if you're diving into this for like a medical study or if there's another angle you're exploring.
Okay, now tell me about emergency treatment of VF. Yeah, of course. So when it comes to the emergency treatment of VF, the top priority is defibrillation. That's using an electric shock to jolt the heart back into a normal rhythm. Time is really of the essence here, every second counts. So you also want to start CPR immediately to maintain some blood flow and then deliver that shock as soon as possible. After that, it's about supporting the heart with medications and advanced life support. It's intense, but the whole goal is to get that heart rhythm stable again. So what else can I fill you in on? Okay, can you tell me in Hindi? बिल्कुल जरूर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का इमरजेंसी इलाज बिल्कुल उसी पर निर्भर करता है डिफिब्रिलेशन यानी कि एक इलेक्ट्रिक शॉक का इस्तेमाल किया जाता है ताकि दिल को फिर से सामान्य रिदम में लाया जा सके ये जितनी जल्दी हो सके उतना बेहतर होता उसके साथ साथ सीपीआर भी शुरू की जाती है ताकि कुछ हद तक ब्लड फ्लो बना रहे उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर दवाइयों और एडवांस लाइफ सपोर्ट का इस्तेमाल होता तो अगर तुम्हें और कुछ जानना है तो बताओ Okay, now tell me the difference between the VT and VF. Absolutely. So the difference between VT, which is ventricular tachycardia, and VF, or ventricular fibrillation, is mainly about how the heart's rhythm is behaving. In VT, the ventricles are beating very fast, but still in a somewhat organized way, and that can sometimes still pump some blood, at least for a little while. In VF, on the other hand, the ventricles are just quivering chaotically, which means they're not pumping blood at all. VF is generally more immediately life-threatening because you lose circulation almost instantly. Both are emergencies, but they have slightly different patterns and treatments. So tell me if there's anything else you're curious about. Okay, tell me which type of ECG in VT and VF the most different we'll see in ECG. Absolutely. So when you're looking at an ECG, ventricular tachycardia, or VT, usually shows up as these really rapid, wide QRS complexes that are pretty regular but fast. And then with ventricular fibrillation, VF, the ECG just looks like this chaotic, disorganized mess with no real recognizable patterns. So basically, VT is fast but kind of organized, and VF is just totally disorganized. All right, anything else you want to dive into? Okay, ऐसा सिचुएशन में क्या सीपीआर देना बहुत ही जरूरी है? हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। ऐसे हालात में सीपीआर देना बहुत अहम होता है क्योंकि जब दिल सही तरीके से खून पंप नहीं कर रहा हो, तब सीपीआर दिल और दिमाग तक कुछ हद तक रक्त प्रवाह बनाए रखने में मदद करती है, जब तक कि डिफिब्रिलेशन या अन्य उपचार न किया जा सके। तो हाँ, सीपीआर एकदम ज़रूरी कदम है। क्या तुम्हें और कुछ जानना है? ओके, तो डिफिब्रिलेशन शॉक देने के लिए कितना जोल सेलेक्ट करना चाहिए? अच्छा सवाल है। आमतौर पर जो डिफिब्रिलेटर होते हैं उन पर एनर्जी सेटिंग्स सेट की जाती है। बाइफेजिक डिफिब्रिलेटर्स के लिए आमतौर पर 120 से 200 जूल्स के बीच एनर्जी सेलेक्ट की जाती है, लेकिन अलग अलग मशीनों और प्रोटोकॉल्स के हिसाब से ये थोड़ा बदल सकता है। तो ये एक सामान्य गाइडलाइन है। क्या मैं कुछ और बता सकता हूँ? सिंक्रोनस का मतलब क्या है? सिंक्रोनस का मतलब ये है कि चीज़ें एक साथ तालमेल में चल रही हैं। जब हम डिफिब्रिलेशन में सिंक्रोनस मोड की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि शॉक को हार्ट के एक खास पॉइंट पर दिया जाता है ताकि वो हार्ट की मौजूदा लय के साथ तालमेल में रहे। इससे हार्ट को एक सही तरीके से दोबारा सामान्य रिदम मिलाने में मदद मिलती है। कोई और बात जो तुम्हें जाननी हो? ओके, पल्स लेस का मतलब क्या है? Well, pulseless का मतलब यह है कि दिल धड़क जरूर रहा है, लेकिन इतना कमजोर या अनियमित रूप से कि कलाई पर या गर्दन पर कोई भी स्पंदन या पल्स महसूस नहीं होती। यानी ब्लड फ्लो इतना कम है कि आप बाहर से कोई धड़कन नहीं पकड़ पाते। ऐसे में तुरंत मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत होती है, क्योंकि भले ही दिल कुछ हलचल कर रहा है, लेकिन वो असल में शरीर के लिए असरदार तरीके से खून पंप नहीं कर पा रहा। तो कुछ और भी जानना चाहोगे? तो ऐसा सिचुएशन में क्या इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले इमरजेंसी ट्रीटमेंट यही है कि तुरंत सीपीआर शुरू की जाए और किसी को एईडी या डिफिब्रिलेटर लाने के लिए कहा जाए। जैसे ही डिफिब्रिलेटर उपलब्ध हो उसे निर्देशों के अनुसार इस्तेमाल किया जाए। साथ ही तुरंत आपातकालीन मेडिकल मदद को कॉल करना बहुत ज़रूरी है। कुल मिलाकर मकसद है दिल की धड़कन और रक्त प्रवाह को जितनी जल्दी हो सके वापस सामान्य करना।
तो अगर तुम्हारे मन में कुछ और सवाल हैं तो बेझिझक पूछो। ओके, ऐसा सिचुएशन में नर्स का क्या रोल्स होना चाहिए? तो नर्स का ऐसे सिचुएशन में रोल बहुत ही अहम होता है। सबसे पहले तो नर्स को सीपीआर जारी रखना होता है और ये तो निश्चित करना होता है कि सब कुछ प्रोटोकॉल के अनुसार हो रहा है। इसके साथ ही वो डिफिब्रिलेटर का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करता है और बाकी मेडिकल टीम के साथ तालमेल बनाए रखता है। कुल मिलाकर नर्स की भूमिका एक तरह से कोऑर्डिनेशन, सीपीआर और सही समय पर सही ट्रीटमेंट देने में बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्या मैं और कुछ मदद कर सकता हूँ? ऐसा सिचुएशन में कौन सा मेडिसिन यूज करना बहुत जरूरी है? अच्छा, इस तरह के हालात में सबसे जरूरी है कि पहले तो सीपीआर और डिफिब्रिलेशन पर फोकस किया जाए। दवाइयों की बात करें तो आमतौर पर एपिनेफ्रिन जैसे मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है जो सर्कुलेशन को सपोर्ट करने में मदद कर सकती है। लेकिन ये सब डॉक्टरी दिशा निर्देशों के मुताबिक और ट्रेनिंग वाले प्रोफेशनल्स द्वारा ही दी जानी चाहिए। तो कुल मिलाकर मेडिसिन सपोर्टिव होती है, पर सबसे पहले टीपीआर और एईडी का सही इस्तेमाल जरूरी है। कुछ और पूछना है क्या? ओके, शॉक देने का पहले कुछ मेडिसिन देना बहुत जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है। आमतौर पर डिफिब्रिलेशन के शॉक्स देने से पहले किसी दवा की जरूरत नहीं होती। सबसे पहले और जरूरी चीज है कि तुरंत डिफिब्रिलेटर का शॉक दिया जाए ताकि ये हार्ट रिदम को दोबारा सेट किया जा सके। हाँ, अगर उसके बाद रिदम वापस नहीं आता तो फिर एपिनेफ्रिन जैसी दवाई दी जा सकती है। Each and every day, we're trying to learn something different and something learn more. But most of the time, we're waiting for the right time to start. The truth is, the right time is not the next year, the right time is not the next month, the right time is not the next week, the right time is not the next tomorrow, the right time is today. Today is the time to learn something different, and today is the time we can improve ourselves.